Hi, good evening, everyone. Nice to see you too, Maheshji. Thank you so much. Good afternoon, Uma. Good afternoon, Mohit. Good evening. Good evening, GK. Good evening, Usha. Is the voice clear? Is everyone able to see the screen? Usha ji is saying she's not able to see the screen, so not able to hear the voice. I think for everyone it's okay. Please check at your end. Thank you, Vikas. Thank you for confirming. For another minute, we'll wait and we'll start. I'm almost done with my setup. So we'll wait for a minute and then we can begin. Meanwhile, how was the trading session, guys? I hope you had a good one today, being the weekly expiry. What was your experience if you just want to share that in a few words? How did it go for you? Did you make money? Did you lose money? Or it was like a no trading day, kuch samajh mein nahi aaya? How was the day? I was saying choppy markets, made little money. Congratulations. You made a little money. Little is also good. So that's also fine if you made a little. That's, I'm sorry to hear that, Sandeep. We'd like to know what went wrong with you. What made you, have that loss. Mohit is saying no trading, market was ठीक है. No position is also a position. That's also fine if you have not taken up a trade. Raj made a loss. Okay, we'll figure out why that happened. What was it that you missed out on? What was your trade? We'll also try to discuss that. Okay, so we are almost like 5 minutes past. So we'll begin with the session now. Shushila is asking for the recording. You can get in touch with SAS. I think on the website it's available there, so you can have an access through that. And today's session is going to be a little, very basic, very. Again, I'll come up with a topic which is very much of a thing in day to day, जो हम सबकी aspiration होती है कि पैसा भी बनना चाहिए, ज्यादा stress भी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा long term के लिए भी बैठना नहीं है, trading करना है. तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग है जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग अच्छी क्यों होती है, और we are going to discuss divergence and RSI, especially RSI. Again, it's a favorite indicator. किसी को भी पूछ लो, कुछ भी नहीं आता तो RSI तो डेफिनेटली पता होगा और आता भी होगा. तो RSI को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन ट्रेड द RSI. तो उसमें से divergence is one of the ways in which you can trade the RSI. So today we are going to talk about divergence in particular as a way to trade the RSI. Quickly in the chat box, can everyone tell me that कितने लोगों को पता है RSI क्या है? किसी ने यूज करा है तो प्लीज put it down. You have used it.
If you've not used it, you don't know, just put that across, so I can get to know that what is the whole like सब लोग जो अपने साथ है, तो सबका overall mindset कहाँ तक का है, so we can proceed accordingly. Vikas is saying, I use RSI, nice. Praveen is also using. Sushila ji doesn't know, okay. Used but not a big fan of it. All right. Sunil, I'm sure that after the end of this session, I'll be able to convince you that it's a very, basic indicator and it's very good. So you will, if not a big fan, but at least you'll start using it back again, I'm sure. So Narendra ji is saying using, again, good to have you, Narendra ji, over here. Used, I follow CCI and RSI. Okay, I know, but I've not used good indicator. Knowing but not using, Uma. Okay, not effective, Raj. We'll see how we can make it effective. It is something that बहुत techniques होती है इसकी use करने की, और जो बुक में हम पढ़ते हैं 70 और 30 वाला जोन, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो why your RSI is not fruitful and it's not effective. But if you look at it from a different perspective, which we will be talking about, so you will definitely find that RSI is definitely useful over here. No, but not using it. All right. Okay, so the mass knows it. Some have used it, some have not used it, but some know about it, some don't know about it. So we'll see how we can use it from a different perspective over here today. Sabse pehle swing trading, I have a small quote on swing trading which I can share, is that it can be a great strategy for traders who prefer a less stressful, more flexible trading approach with the potential of higher returns and better risk management. बहुत सारी चीजें इसमें highlight करी है मैंने. It is something that is very less stressful as compared to a day trading, and it is more flexible of a trading approach. So today, again, going back to what are the topics that we are going to cover is first, swing trading क्या होती है, RSI क्या होता है, what are ways to use RSI, and I have specially mentioned think outside the box. We are not going to look at it from a traditional RSI trading perspective. We are going to think it out of the box. Divergence क्या होता है, application of RSI and divergence in trading, and deciding your entry and exits on the trade. Coming to swing trading, just like the GIF, same cheese. Prices are moving to and fro in maybe a upward sloping channel, sideways या फिर downwards channel जिसमें prices trade कर रही है, and आप दोनों तरफ के trades लेना चाहते हो, that is your swing trading. Okay. So swing trading is a type of trading in which you hold positions in a stock or other investments over a period of time. A particular time, it can be 1 day to few weeks, but वो ज़्यादा time का नहीं होता. It's a long-term investment. We hold in for years together, right? Swing trading is something you hold in for a few weeks, maybe 3 or 4 months. That for a few weeks can combine of. But उससे ज़्यादा का लंबा trade वो होता नहीं है. It again depends on the time frame that you are analyzing on, and you can make the most out of it. So what do swing traders look up for? Swing traders look up for buy and sell opportunities of an asset based on the fluctuation and its price over a short period. मतलब एक छोटे time frame के लिए जो भी आपकी price में fluctuation आ रही है to and fro की, उसी points को आप ध्यान में रख के आप swing trading का इस्तेमाल करते हो. And these are temporary price changes. मतलब ये आपका trend नहीं define करता है, ये आपके temporary price changes होते हैं जिसका हम utilization कर रहे हैं. And to do swing trading, the tool that you can have fundamental के basis पे swing trading नहीं कर सकते हो, आपको technicals आना चाहिए. So technical understanding is very very necessary if you want to be a swing trader. Time commitment जो इसके अंदर लगता है, time commitment भी ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको prices constantly नहीं but prices monitor करना है, on and off you have to monitor the prices. So you cannot escape from the part that you are participating in the market. आपको वो थोड़ा इसके अंदर psychological effect भी होता है जब prices बहुत ज़्यादा volatile और fluctuate होती है. तो these are all the things. मतलब जो day trading का thrill होता है उससे थोड़ा कम thrill होता है, but it is for the people. अगर आप day trading कर रही हो not profitable, try swing trading, you will become profitable, right? So it's a midway
between the two things. It's a midway between your long term investment and your day trading. Day trading का thrill भी आपको मिल सकता है और long term investment के जो gains होते हैं वो भी आप swing trading से बना सकते हो. So this is a way in which most of us would like to trade. मतलब day to day, week to week analysis करते हैं तो ज्यादातर traders swing traders ही होते हैं जो markets में constantly participate करते रहते हैं. ठीक है. Charts, indicators, technical tools are very necessary. इसमें discipline की बहुत जरूरत होती है. As I said, your time commitment and your discipline is very, very necessary. And the most important is your risk management. How you are going to manage your risk, position size किस हिसाब से करोगे, कितने trades आप लोगे, ये सब चीजें जो होती है ये बहुत जरूरी होती है when you are into swing trading. Stop loss, again the major part जिसको हम discuss भी करेंगे. That's also very, very important when it comes to swing trading. Now I've told you what all swing trading is. जो भी आपको समझ आया है उसके हिसाब से can you just put it down across into the chat box again that what are the benefits of swing trading? आपको क्या लगता है क्या benefit होगा swing trading का? Okay, both side trade, Uday is saying. Correct. You can have both. आप long भी कर सकते हो, short भी कर सकते हो. If it's an upward sloping channel जिसके अंदर आप swing trade कर रहे हो, तो आप long भी और आप short भी कर सकते हो. Minimum loss, low SL, need to sit whole day. No, again, Sushil, I'll correct you there. पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है. You don't have to sit the whole day there. All you have to do is you have to monitor. आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, भले ही आप पूरा दिन मत बैठे रहो, आपको रेट्स पता होना चाहिए. योर एंट्री एंड एग्जिट शुड बी डिफाइंड. इफ यू हैव दैट डिफाइंड यू डोंट नीड टू सिट द होल डे. वो तो एनी ट्रेडिंग, इवन एज अ डे ट्रेडर, पीपल से कि आपको पूरा दिन स्क्रीन से चिपक के रहना पड़ेगा. नो, if you have your entry and exits in place you can do anything. आजकल तो बहुत सारी facilities आ गई है. It's like not the old days where you had to call the broker and put in across. You have GTT orders, you have stop loss orders, everything is there. So if you know your entries and exits, again trading is something that does not require your entire time. Okay, less risk. Okay, short term. That's a very nice one, Mohit. Yeah, short term capital gain to lagega. Not stuck with one trade for too long. Okay, risk and reward is high. Jitna risk utna reward. That's always the balance of that. Whatever risk you take, you get the reward for it. Proper understanding of market structure, contain over trading, better opportunities to work out, better systems. Okay, main problem is gap up, gap down. Correct. Very nicely said. Gap up, gap down. But then again, that is your risk management विकास, जिसमें आप gap up और gap down को जो भी होता है उसको आप stop loss या GTT orders से देख सकते हो, and that's how you will have to do it. Now this brings me to the next slide जहाँ पे we will talk about the benefits. First is flexibility, right? As a swing trader, you have the flexibility, you have the trading approach. Unlike day trading where you have to give more time commitment, here you have to give lesser time commitment. आपका जो short term price fluctuation उसका भी आप फायदा उठा सकते हो. So a lot of flexibility is there when it comes to swing trading. It reduces your stress. Stress कम होता है इसके अंदर. Trust me, because आपको जो डे ट्रेडिंग का स्ट्रेस होता है ना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर पे बैठे रहो, देखते रहो एंड ऑल, बेटर डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन से आप उसको अवॉइड कर सकते हो. यू विल हैव लेसर इमोशनल risk over here as well. Then you have potential of higher returns, as we have a lot of people talking about risk and reward and returns and all. So yes, आपको short term price movement का advantage मिलता है, you can make better returns. Lower transaction cost, क्योंकि swing trading में आप position को hold करते हो, right? And there are a lot of we have platforms where आपका जो broking होता है, that is something that is lost. You're holding for a longer period of time. So your returns are also higher. So that's why you have lower transaction costs there. Then access to multiple trading opportunities. Again, swing trading में बहुत सारी opportunities मिलती है. You will get onto it. Risk management. This is very, very necessary.
Swing trading allows traders to manage risk by setting stop loss orders and other risk management tools to limit the potential losses. आपका जो भी stop loss order वगैरह आप डाल रहे हो, उसके basis पे आप इसको कर सकते हो. Any approach be available for stock? Yes, we will be going to that thing. First, I just want to tell you that what is swing trading all about. So I hope everyone is so far clear कि भाई swing trading और day trading में बहुत फर्क है. पर दोनों के बीच में we are not like having that kind of risk which is there in day trading, but still we are having benefits of long-term trading. So it's a safe option. Are we all on the same page? Hope everyone has understood what I'm talking about over here when it comes to swing trading. Give me a quick thumbs up into the chat box. All right, can we have some thumbs up coming in? We have got a yes from Vijay. We've got a yes from Raj. Oh, yes, thumbs up. Awesome. Great. ठीक है, चलो अब जब स्विंग ट्रेडिंग हम सबको समझ में आ गई है, तो स्विंग ट्रेडिंग का हम बेनिफिट आरएसआई के बेसिस पे कैसे उठाएंगे. व्हाट इज आरएसआई? जैसे बहुत लोगों को पता है आप में से कि आरएसआई क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं एंड ऑल. सो आई एम हियर अगेन गोइंग टू टेल यू व्हाट आरएसआई इज. बेसिक साइड उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उसकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं यूज करने के, वो मिथ्स को ब्रेक करेंगे. ठीक है, विल थिंक आउटसाइड द बॉक्स कि इसको कैसे और यूटिलाइज कर सकते हैं. Now, coming to RSI, because I am from a technical background, मुझे formulas, maths को लेके बहुत अच्छा लगता है जानना कि चीजों का orientation कहाँ पे है, उसके अंदर क्या जाता है and all. तो that's where मैंने इसमें थोड़ा mathematical formula भी cover करा है कि हमें पता चले कि भाई इसके अंदर what are we putting in, because एक चीज very prominently we have heard बचपन से भी कि garbage in garbage out. अगर कचरा जाएगा तो कचरा ही निकलेगा, पर अगर कुछ यूजफुल चीज जा रही है तो उसका यूजफुल आउटपुट निकल सकता है, राइट. सो व्हेन इट कम्स टू आरएसआई भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी विल सी दैट थिंग. तो बेस्ड ऑन इट वी विल कम टू नो कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अहेड, इसमें से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डिसाइफर कर सकते हैं, तो यूजेस अपने आप हमको पता चलने लग जाएंगे. ठीक है. नाउ आरएसआई इट इज अ पॉपुलर इंडिकेटर and it is used to measure the strength of a security's price in action compared to the upward and downward price movement over a specified period of time. अब इस information को हम थोड़ा सा decipher करते हैं कि RSI में हम क्या करते हैं कि जो security की ही कुछ past की prices होती है, कि अगर हम 14 की RSI, बहुत लोगों ने सुना है 14 की RSI यूज कर रहे हैं, या फिर हमें chat box में भी there was someone who had mentioned that is using RSI on a smaller time frame. If I am able to go back, 8 ka RSI has been used on 15 minutes. Narendra ji had put it across. So that is what कि आप 8 दिन की past prices को लेके एक calculation करो जिससे आपको उसकी strength पता चलती है कि past 8 days में उसकी movement के basis पे उसकी strength कैसी रही, right? Now this movement is again put it into two bounds, 0 से 100 के range में, with a condition of overbought and oversold. बहुत ही classical, सब लोगों ने सुना हुआ है overbought oversold, correct? अब इसी चीज को कैसे हम और highlight कर सकते हैं, we'll go to that thing, but this is the formula. जो अगर आप में से किसी को Excel करना आता है अच्छे से, तो आप Excel से भी इसको formulate कर सकते हो, right? Where RS is the average gain of an asset price over the past period divided by the average loss. ठीक है. ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स यूज आरएसआई के 70 के ऊपर ओवरबॉट हो गया, 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड हो गया. अब अगर आप इस तरीके से आरएसआई को यूज कर रहे हो, तो आई एम श्योर यू विल से दैट दिस इंडिकेटर इज नॉट यूजफुल, इट डज नॉट गिव मी मच ऑफ अ वैलिड इंफॉर्मेशन. आरएसआई को यूज करने के देयर आर डिफरेंट वेज व्हिच वी विल सी वन बाय वन, राइट. Just wait for a minute, please. चलो, ये कनेक्ट हो चुका है. हम लोग एक नॉर्मल सा यहाँ पे चार्ट ले लेंगे.
सो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स टुडे. सो ट्रेडिंग व्यू पे वी यू गेट दिस इंडिकेटर ऑफ RSI 14 का RSI यूज करा गया है. नाउ इसमें दो लाइंस इफ यू सी राइट, द टू लाइंस दैट आई हैव मार्क्ड, वन इज 70 एंड वन इज 30. बट डू यू सी दैट एवरी टाइम प्राइसेस जब 70 के ऊपर जाती है राइट, तो उसके बाद ट्रेंड नहीं कर रही है, इज इट गेटिंग ओवरसोल्ड एंड आर द प्राइसेस कमिंग डाउन? पुट अ यस और अ नो. करेक्ट उमा, जो जब आप बोल रहे हो कि नहीं प्राइसेस उसके नीचे नहीं आ रही है, तो व्हाट डज इट सजेस्ट कि 70 के ऊपर इनफैक्ट मैं जब भी देख रही हूँ प्राइसेस को मूव करता हुआ, तो ये तो और ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है ना, दे आर रनिंग इवन फास्टर. So if you look at it from this perspective, that on 70s on a daily, if my prices are above 70 in RSI, means uptrend mein hai ye stock. There it's not in a downtrend, it's in an uptrend and it's in a strong uptrend. After that, you'll be able to make better gains. अब जैसे यहाँ पे ये first time था जब इसने 70 का level clear करा था, this was the place, right? At that point in time, in fact, if you see, ये earlier यहाँ पे जो इसका resistance था, उस level को इसने break करा है. So after 70, the prices started trending. It was not that after 70, it was in an overbought range. It was starting to trend after that, right? Soon as it goes below 70 over here, right? That's where you see you start seeing some correction. उसके बाद भी प्राइसेस थोड़े से ऊपर गए हैं, यहाँ पे काफी ऊपर गए हैं इनफैक्ट, बट यहाँ पे जो फर्स्ट लैग ऑफ करेक्शन आया था वो 70 के नीचे जब हमने मूव कर दिया ना, तब हमने वहां पे करेक्शन देखी. बट 70 के ऊपर तो ट्रेंड ब्रेकआउट था. सो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि 70 के ऊपर इफ अ स्टॉक इज इन अ बुलिश ट्रेंड, वो 70 के ऊपर और फर्दर ट्रेंडिंग है, तो दैट्स द राइट वे ऑफ सीइंग द RSI. 70 के ऊपर मान के it's in an overbought kind of a place, it's not the right way. Similarly 30 के नीचे, अगर 30 के नीचे जाता है means it's not that the stock is oversold और अब तो यहाँ से buying आएगी, it means it is weak और weakness आने की इसके अंदर possibilities है. ठीक है. So out of the all techniques, these are certain ways in which you can use the RSI जो हमने अभी बात करा. That's called trend confirmation, जहाँ पे we are confirming the trend based on the price of based on the level of the RSI. Okay. Yes, we will take stock specific questions, Mohit. Just once that we have gone through the uses of RSI, तो RSI को लेके हम बहुत सारे examples लेंगे. And once we have seen a few examples in RSI और उसकी application, we will see in divergence. So first, I will just take quickly through these other ways in which we use the RSI. So RSI को ऐसे तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग यूज करते, इसलिए आई हैव मोर ऑफ यूज्ड इट एज यू नो हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है कि उसमें से जितना भी निकाल सको ना निकाल लो. यू कैन डिसाइफर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, क्योंकि RSI जैसे हमने फॉर्मूला में देखा प्राइस जाता है उसके अंदर, तो जब आप उसमें से इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो तो यू आर डिराइविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइजेस. एंड हमारे ट्रेडिंग में तो हमेशा यही कहते हैं प्राइजेस गॉड, भाव भगवान से. So if you know how to decipher information out of RSI itself, you derive a lot of information out of your prices also. ठीक है. Now overbought oversold हम सबको पता है कि एक लेवल के ऊपर जब RSI जाती है, it's an overbought and oversold zone. Trend confirmation is something I told you right now कि overbought oversold 70 और 30 का range classically defined है. But if you are trading on the higher side, let's say the stock is in an uptrend, then this overbought oversold range for an uptrending stock
becomes from 90 till आपका 40। तो अगर 40 के नीचे जाएगा तो इट्स गोइंग डाउन, 90 के ऊपर उसको ओवरबॉट वहां पे बोलेंगे कि भाई बहुत ज्यादा बाइंग आ चुकी है 90 के ऊपर, इट्स इन एन अप ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हेनेवर द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, जैसे नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का, मेटल स्पेस में काफी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, तो उन स्पेसेस के लिए जो आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन रहेगा, तो इफ द प्राइसेस गो बिलो 10, मतलब द आरएसआई वैल्यू गोज बिलो 10 मींस इट इज ओवर सोल्ड वहां पे, और उसका जो ओवरबॉट का वहां पे लिमिट आ जाता है ना डाउन ट्रेंडिंग, दैट इज 60। सो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। 70-30 को आप इरेज कर दीजिए, दीज आर द न्यू लेवल्स कि आप अगर अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो अबव 90 is your overbought and below 40 is your oversold. In a downtrending stock, above 60 is your overbought and below 10 is your oversold zone. So this is a new perspective for RSI. इस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी चीजें पता चलेगी। We'll go down to some charts now as we are getting a lot of stock requests यहाँ पे। So first Mohit has to ask about Tata Motors. Done. We'll see Tata Motors. You can put down other stocks as well, guys. Whichever you want to check on. We'll take up some stocks now. ठीक है, टाटा मोटर्स। अब मैंने यहाँ पे आरएसआई की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। तो अब हम सेटिंग्स में जाते हैं। ओके, यहाँ पे आरएसआई हमारा पर्पल से है, आरएसआई बेस्ड एमए स्मूदन आउट कर दिया है। आपका अपर बैंड है वो 70 की जगह पे मैं 90 लगा देती हूँ। आपका मिडिल बैंड जो है वो हम यहाँ पे हटा ही देते हैं, और आपका लोअर बैंड है वो मैं 10 पे लगा देती हूँ, ठीक है। और बीच की हमारी 60 to 40 की भी एक रेंज आएगी, ठीक है। सो दैट 60 to 40 विल बी अ नो ट्रेड जोन, it will be like sideways, हमें वो पता चल जाएगा। when we'll see the prices we'll come to know, right? Now if you see, most of the data is getting comprised in these two bands. There are just less number of times जहाँ पे हमें उसके ऊपर, अब जैसे टाटा मोटर्स में यहाँ पे there was one time when we got it, उसके बाद वापस से RSI went in the range of 60 to 40. If you see over here, sideways चल रहा था, right? यहाँ पे टाटा मोटर्स दैट टाइम आरएसआई वाज व्हाट 60 to 40 का रेंज में आ गया था, वापस 40 से इसने बाउंस लिया एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप। जैसे ही यहाँ पे 90 के ऊपर गया, वापस क्या हुआ, साइडवेज रेंज से नेगेटिव ट्रेंड बना रहा है अभी। वी आर नॉट हैविंग, अच्छा प्लीज चेंज द येलो कलर, श्योर आई कैन डू दैट। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। इज दिस clear and visible to everyone? ठीक है, so immediately this is one in Tata Motors that we see immediately after it touched 90 over here, uptrending stock है, right? ओवरऑल यहाँ पे इसका ये अपट्रेंड चल रहा था, जैसे ही अपट्रेंडिंग में 90 के लिमिट्स को छुआ, उसके बाद यू सी अ कंसोलिडेशन और अ साइडवेज जोन हैपनिंग आउट देयर, राइट? सिमिलरली we've got a query for Reliance also over here. Classical, we see it moving in uptrend ज्यादातर टाइम, बट अभी ऑफ लेटली क्या हो रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर नीचे 2300 वाज अ लेवल एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, इसके नीचे तो ब्रेक हो ही चुका है, बट फर्दर अगर ब्रॉड रेंज में देखा जाए तो साइडवेज 60 to 40 की ही आरएसआई की रेंज में चल रहा है। वी आर नॉट हैविंग एनी फर्दर डाउन मूव, सो यस, सो 90 सो 10 का जो रेंज है ना वो आपको बहुत कम दिखेगा। दैट इज वेयर आई सेड कि इफ द स्टॉक्स आर इन एन ट्रेंड, आपको ट्रेंड पता करना है उसका, सो इट्स फॉर ट्रेंडिंग कि 90 अप ट्रेंडिंग में इफ इट हिट्स 90 का आरएसआई, तो वहां से आपको उसमें नीचे की तरफ का ट्रेड देखना है। You have to see for reversal signs there or halt. The trend has halt, so that's an exit signal also for you. इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, इन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक अगर आपको 10 की आरएसआई नीचे की तरफ में हिट कर जाती है तो उसका मतलब है कि बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक कोई ले लेते हैं हम, जैसे अभी फिलहाल मेटल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो
JSW स्टील को ले लेते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ट्रेंड इसका क्या चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में आप देखो जैसे ही 90 का RSI हिट हुआ है साइडवेज, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, right? Yeah, this is the point from where it gave breakout 295 300 की रेंज में। तब आपका RSI कहाँ पे, RSI हिट हो चुका था यहाँ पे 90 को। मतलब 90 in an uptrending stock again, if I have to say, is a place, Srinivasa, where you have to see that signs of reversal. You have to see the signs of reversal over there. ठीक है, तो आपको वहां से साइंस ऑफ रिवर्सल ट्रेंड हॉल्ट मिल गया। नेक्स्ट ब्रेकआउट कब हुआ, इसके ऊपर प्राइसेस गई तब। उसके बाद द स्टॉक इज ट्रेंडिंग अप अप अप, यहाँ पे दिस इज द टाइम व्हेन इट हिट 90, या ये पॉइंट एक एकदम एक्सट्रीम अप मूव आ गया, उसके बाद 90 का पॉइंट हिट करा, उसके बाद स्टॉक बढ़ा है डेफिनेटली। द लेवल समवेयर हियर वाज 630, उसके बाद वी हैव सीन 760 आल्सो, so there has been an increase, we have missed on those gains, but what happened after that? Sideways, right? You had the market moving sideways after that, you didn't have much of a momentum into it, so momentum fizzed out. That's where again 90 और 10 का distinguish सबको समझ में आ गया। Just put me a thumbs up quickly guys, why am I saying about these two values of RSI 90 and 10? Oh, they got it, Vikas got it, Sandeep has got it, great. Can we have more thumbs up quickly? So we'll move ahead. Rajan is saying one is again, okay. करेक्ट, इट हेल्प्स राइटर्स रादर देन बायर्स। यस, बायर्स को तो वो हेल्प ही नहीं करेगा ना, बायर्स को हेल्प क्या करेगा कि आपको एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगा। एंट्री पॉइंट तो सबको लेना आता है, इफ इट्स एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक यू एंटर एट एनी पॉइंट इन टाइम, you are going to get money in it, right? But if you are into a trade already, आपको exit strategy पता होनी चाहिए, all right? So exit के लिए बहुत काम आता है ये। Yes, Sunilji, definitely we will be talking about the things that I have to talk about. Don't worry, कोई भी points यहाँ पे miss नहीं होने वाले। I'll make sure कि सारे points cover हो जाए। स्टॉक स्पेसिफिक मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि अगर स्टॉक स्पेसिफिक पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना तो थोड़ा रिकॉल करने में इजी रहता है। इट्स वन ऑफ माय रिकॉलिंग टेक्निक्स व्हेन वी आर लर्निंग अप अ न्यू कॉन्सेप्ट और वी आर लर्निंग अबाउट अ थिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, कि भाई खुद की एग्जांपल पे अगर लिया है ना तो जल्दी से पता चल जाएगा, जल्दी से याद रहेगा। तो दैट इज द ओनली थिंग व्हाई वी आर टेकिंग अप सम स्टॉक क्वेरीज राइट नाउ, ठीक है। ओके, there are 2-3 requests where we have got that, please explain it again. Okay, very simple words. RSI overbought oversold हम सबको पता है, let's go down to the PPT, ठीक है। Worst use of RSI is overbought and oversold. We all know about overbought and oversold, कि भाई एक लेवल के ऊपर जाता है जो classically people say that RSI is above 70 is your overbought, below 30 is your oversold. But there is a twist when we come to trend recognition. There is a twist in terms of the levels of the RSI, and it's given by authors also. अगर आपको search करना आप कर भी सकते हो, and it's upon the experience also that I can share. When we are in an uptrending market, okay, when we are in a bullish market or we are in an uptrending market, whenever your RSI in an uptrending stock touches 90, is your overbought sold. So overbought और oversold की जो levels है उसको हम यहाँ पे change कर रहे हैं। Those levels change, it becomes above 90, and वहां पे जो आपका oversold का level आ जाता है वो हो जाता है वहां पे 40 का। अब when we are talking about a downtrending stock, stock नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, in that case आपका जो overbought level है वो 60 पे आ जाता है, और आपका ओवरसोल्ड का जो लेवल है ना नीचे की तरफ वो 10 का आता है, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग है ना, गिरती ही रहने वाला है, तो नीचे आपको जो आपकी ओवर सोल्ड वाली जो लिमिट है वो एकदम एक्सट्रीम लो पे लेके जाना है। तो उससे भी नीचे गया तो मतलब भाई बहुत ज्यादा सेल हो गया, इससे ज्यादा तो कितना ही बेचेंगे, राइट? सो दैट इज द लॉजिक ऑफ 90 एंड 10। और बीच में दो नंबर्स और हमने बोले 60 और 40, ज्यादातर ऐसे 60 और 40 का जो रेंज है यू कैन डिफाइन इट एज अ साइडवेज मार्केट। अगर आपको साइडवेज मार्केट डिफाइन करना है तो 60 और 40 का लेवल आप उसको डिफाइन करते हो।
नाउ कमिंग टू ओवरबॉट हो गया हमारा, ओवरसोल्ड हो गया हमारा, ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, आरएसआई से फिल्टर कैसे करते, तो जैसे हमने जोन्स डिफाइन करी, तो आपको अगर अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को यहाँ पे करना है, एंड ऑफ द डे टेक अप एन रिपोर्ट आउट, जिसके अंदर आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, जस्ट हैव टू फिल्टर अप ऑन एन एक्सेल प्राइस वेयर आरएसआई इज अबव योर 60 और 70 का जोन, दोज आर द लेवल्स व्हिच यू आर लुकिंग अप फॉर, के ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, है ना, तो you can use it up as a filter. Now coming to divergence, ठीक है, अभी तक का I hope everyone is clear with it. Yes, so the start time was daily. Dailies पे मैंने अभी RSI use करा है, इसको 30 minutes पे भी use करेंगे. When we'll go to examples of divergence, we will use it on 30 minutes का chart. बिल्कुल सुनील जी, that's what we are going to do now. So divergence as a word, right? क्या चीज आता है दिमाग में? If you hear about the word divergence, what comes to your mind? डेविएशन, दो अलग दिशाओं में भागना, या फिर सब चीजें लेफ्ट जा रही है, हमको राइट जाना, राइट, ऑपोजिट पॉइंट में जाना, डाइवर्ट, दो अलग अलग पॉइंट से जाना. सो इफ देयर इज वन स्टार्टिंग पॉइंट ओवर हियर, देयर आर टू वेज इन व्हिच यू आर डाइवर्जिंग, राइट. सो दिस इज ऑल योर डाइवर्जेंस, के दो तरफ प्राइस मूव हो रहा है, मतलब प्राइस और एक अप इंडिकेटर ले लो, दोनों अलग साइड पे मूव हो रही है, तो दैट इज योर डाइवर्जेंस, डेविएट होना और डायरेक्शन चेंज होना, राइट. नाउ दिस डाइवर्जेंस अलोंग विथ आरएसआई कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बुलिश और बेयरिश, ठीक है. बुलिश डाइवर्जेंस कब होता है? जब आपकी प्राइसेस ओवर हियर, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज मेकिंग अ न्यू लो, आपकी प्राइसेस जो है वो नया लो बना रही है, व्हाइल द आरएसआई इज मेकिंग अ हायर लो. तो इसको अगर मैं इन टर्म्स में डिवाइड करूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Right, so if I have to define my bullish divergence over here, तो bullish divergence क्या होगा कि this is my price which is moving like this, पर मेरी RSI नीचे जो है ना वो ऐसे मूव कर रही है. क्या हुआ यहाँ पे? प्राइस ने तो नया लो बनाना शुरू कर दिया, RSI ने क्या करा? यहाँ पे RSI ने हायर लो बनाना शुरू करा. दिस इज योर बुलिश डाइवर्जेंस. सिमिलरली इन दिस केस जब इसका काउंटर मूव होता है, दैट इज योर बेरिश डाइवर्जेंस. कैसे होगा वो चीज अभी मैं बताती हूँ आपको, राइट. सो इन बेरिश डाइवर्जेंस व्हाट डज इट से? दैट योर सिक्योरिटी इज मेकिंग अ हायर हाई, प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, पर आपकी जो RSI है इट इज मेकिंग अ लोअर हाई, आपकी RSI ऐसे जा रही है. तो ये क्या हुआ? ये ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है. व्हाट इज इट शोइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्जेंस समझ में आया, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, प्राइस कुछ और बना रही है, RSI कुछ और बना रही है, मतलब प्राइस और RSI दोनों एक साथ में नहीं चल रहे. तो जब भी आपका प्राइस है वो लोअर लो बनाना शुरू करे, बट RSI तो भी बोल रही है कि हायर हाई बनाओ, मीन्स देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ से बाइंग आएगी, राइट. सिमिलरली बेयरिश डाइवर्जेंस में आपकी प्राइस तो नया हाई बना रही है, पर RSI नहीं मान रही है, RSI बोल रही है भी मैं तो उल्टा चलूंगी, मैं नीचे की तरफ जाऊंगी. So that is your bearish divergence. This is a sign that you are going to have selling coming in on these stocks. Now I hope it is clear and we will be able to combine this whole thing together. कुछ स्टॉक एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से लूंगी, right, and then you will also help me in checking out other stock examples. मेरी तरफ से जो स्टॉक एग्जांपल्स है, we will first तो हम सबका चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसको छोड़ नहीं सकते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ज्यादातर when I'm seeing RSI, I personally like to use this divergence on 30 minutes का चार्ट. डेलीज पे तो इसका फैंटास्टिक रिजल्ट होता है. 30 मिनट्स पे स्विंग ट्रेडिंग की हम यहाँ पे बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 30 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें
काउंटर मूव्स इसके अंदर पता चलेगी. सो लेट्स गो डाउन टू अवर फर्स्ट फेवरेट निफ्टी. उसको नहीं छोड़ सकते, उसके बारे में तो डिस्कस हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही करना था, राइट. आज के दिन में क्या हुआ निफ्टी, राइट. ये हमारा आज का दिन है. आज के दिन में क्या हुआ निफ्टी को, सुबह खुला, वी हैड प्राइसेस ट्रेडिंग डाउन, फिर एक अपस्विंग बनाने की कोशिश करी. ओवरऑल इफ यू आस्क मी द ब्रॉड व्यू ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली राइट नाउ, जो आई थिंक काफी लोगों ने अपनी सेशन अटेंड करी थी 10th को हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी ने यहाँ पे एक गैप डाउन दिया है. वी विल बी कंटिन्यूइंग द डाउनवर्ड ट्रेंड. वी सस्टेन्ड दैट सेम थिंग और उसके बाद हम डाउनवर्ड ट्रेंड ही कर रहे हैं. And now also if you ask overall कौन सा ये एक लेवल बन रहा है, यहाँ का सपोर्ट लेना है निफ्टी को and it has to move back up again. This is what I see on a broader chart. अब 30 minutes पे I have to take up a swing trade over here, ना. तो क्या करना है, swing trade में पता चल रहा है यहाँ पे there is this one point if you see. Let me highlight it with रेक्टेंगल से पहले हाईलाइट करेंगे और फिर उसके बाद हम ना उसको और डिसाइफर करने जाएंगे. दिस इज द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर. द सेम थिंग हम आरएसआई में देखेंगे. क्या बना रहा है नीचे, व्हाट इज दिस फॉर्मेशन, बेयरिश फॉर्मेशन, लोअर लो बनाया है आरएसआई का, राइट. यहाँ से लेके लोअर लो बनी. आरएसआई ने क्या करा, ये यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ पे बनाई, दूसरी कहाँ पे बनाई, ऊपर की तरफ में. RSI ने तो हॉल्ट मार दिया. So what we had today, this is what yesterday's, this is the first downward. आज के दिन में यहाँ पे ये confirmation हमें मिली. उसके बाद क्या देखा, higher high formation बननी शुरू हुई. So on a daily is what we saw that we also had halt that is coming in. Support लेना चाहिए था because there was a previous swing low back there. And based on the same thing over here also we see in RSI as well that this is happening. So that's also one part of it that you can use. Now second way जो हम लोग लेने वाले हैं मेरी तरफ से example वो बैंक निफ्टी का होगा. बैंक निफ्टी में भी same formation. So एक Dow principle होता है that both the averages must confirm, and both the averages were confirming to me over here. दोनों averages were telling me about the same thing over here. So what happened in that case, if both the averages were confirming to me, I am sure कि भाई एक bounce आज के दिन में यहाँ पे आना ही चाहिए. Very simple indicator. Right. क्या हुआ, prices ने new low बनाई, यहाँ पे we saw a new high forming it, right. Now the next example that I have from my end is Bajaj Autos. These are some latest example. Today itself I was just scanning on some charts, so you can also scan it and you will get it. That Bajaj Auto क्या हुआ यहाँ पे, RSI gave a halt. Prices were trending down. यहाँ पे trend up हो रहे थे, उसके बाद trend down. So वहाँ पे भी हमें एक bullish या reversal देखने को मिला. उसके अलावा दूसरा है Asian Paints which I have. Right, so these are certain stocks which have these divergences, right, and based on which we can see यहाँ पे prices ने halt लिया है, RSI has started moving up, and we saw a good up move coming in and the breakout over here. So further इसके अंदर भी strength बनी रहेगी, right. Overall फिर उसके बाद open interest data वगैरह भी हम नहीं जा रहे हैं. And the last stock which I have is Axis Bank. Banking में overall we are बैंक निफ्टी को confirm कर दिया था. Now stock कौन सा पिक करे, तो एक्सिस बैंक का स्टॉक यहाँ पे मिला. एक्सिस बैंक के स्टॉक में क्या हुआ, न्यू लो फॉर्म हुआ था. RSI यहाँ पे हाई बना रही थी. We will take this thing low, right, and this is the new high forming. So that's where we had the bounce. Now target stop loss decide करना, this is very very important. तो हमारी लास्ट सीरीज में हमने बात करी थी फिबोनाची की, where we were using Fibonacci to find out the targets and stop losses. Again, I applied the same thing over here. जो मेरी previous swing थी उस पे मैंने Fibonacci apply कर दिया, and I started trading on the long side of it based on the Fibonacci levels of the same. Meanwhile that we have all the stock queries coming in, there is a small poll that I am launching over here.
and I'll be glad if everyone can answer on the same. Meanwhile, आपकी जो भी stock queries है आप chat box में डाल सकते हो. We will go down to seeing all of this. I would also like to discuss one more trade. जब भी RSI divergence की बात होती है, there is one trade which made, like was my best trade of my trading career back in 2015 also, or अभी recent 2021, same stock, same strategy and observation, and it really, was like the best trade of my life. And now also I can, talk about it any point in time. I'll share that, and I'll also take some stock queries after that. Okay. So the stock query, the stock which I have it, is Dr. Reddy's. This is a stock which is like really, made really good money for me back in 2015. अगर to back 2015 का इसका data देखो ना, तो there was an RSI divergence जो top पे दिखा था, ठीक है? And based on that, I had traded on it. Dailies पे था. As I said कि daily पे तो कमाल का काम करता है ये चीज, and that's what I had at this was the time. So it was almost यहाँ पे दो top बना दिए थे इसने. And next what I had was this observation on RSI. There was a divergence forming. अगर हम यहाँ पे इसको मैं highlight कर दूँ, so this was the place where the stock was forming two tops. And उसके बाद नीचे RSI को जब मैंने देखा तो it was more of like that, jackpot वाला जो experience होता है ना, ये इसके बाद ना it fell down. So I had this one trade. It was like start of the month जहाँ से इस trade को लिया था, and just within few days it was down by almost 1400 points. So this was one of my best trades based on RSI and the Fibonacci levels and support and resistance. क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे नीचे था कि ये तो इसका स्विंग है ना, तो एक तो पहला यहाँ पे, बट उसमें तो उसने चांस ही नहीं दिया. It had that steep fall into it. So this was taken decisively, and I was like very happy over here. मैंने zoom कर दिया है, right? तो ये price action ऊपर था, RSI नीचे था, और उसके बाद तो मतलब it was more of like that बल्ले बल्ले वाला scenario कि the fall was so steep into it कि ये वाला जो level था उसने तो उसको break कर ही दिया था. उसके बाद we had a halt here. बट देन उसके बाद अगर लेफ्ट साइड ऑफ चार्ट पे देखो तो नेक्स्ट नीचे जो लेवल मिलता है सीधा यहाँ पे 3200 तक का लेवल मिल रहा था. तो दैट वाज द बेस्ट ट्रेड. एंड रिसेंटली भी 2021 में दिस इज आल्सो वन ऑफ द ट्रेड, आई हैड द सेम ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे आरएसआई जो अपना प्राइस एक्शन है वो तो ऊपर की तरफ का बना हुआ था प्राइस, एंड RSI जो है, राइट, RSI was not giving the support. RSI नीचे की तरफ बन रहा था. Again draw the RSI की प्राइस का तो ऑलमोस्ट एक आपको पता चल रहा है. दिस वाज द RSI, राइट, एंड दिस वाज द प्राइस एक्शन. तो प्राइस हॉल्ट पे आ चुका था. इट वाज नॉट गिविंग अ ब्रेकआउट. मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हो गए थे, एंड देन दिस वाज अगेन वन ऑफ द good trades which I had. But जो 2015 का fall मिला था, same was not there right now, but it was still good. It was a great trade out there. And this is what is my experience with RSI and divergence. In fact, if you say 2020, when there was a conference in India where almost all TAs were a part, and divergence was something that was most talked about. So I'm sure you should know about this thing. Right now, coming down to some questions that we are seeing, we have got last few minutes, 10-15 minutes. We'll take up all of those queries and questions now. Right. So
अदानी पे तो कौन सा वाला इंडिकेटर आपका काम कर रहा है, आप मुझे बता दो राइट नाउ, सिवाय के आप लेफ्ट साइड ऑफ चार्ट पे कुछ प्राइस एक्शन देख के बता दो। उसके अलावा दिस इज समथिंग आई हैव एज एन ऑब्जर्वेशन ऑन वीकलीज व्हिच आई हैव हाइलाइटेड कि पहले का एक जोन था, उसी जोन के पास इट इज टेकन एंड देन इट इज मूविंग बैक अगेन इन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। बट इफ यू हैव टू सी ओवर हियर आरएसआई इस पे भी काम करता है। जस्ट आपने बोला है तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे एंड आई एम एबल टू शेयर इट विद यू दैट सी दिस राइट। अब आपकी आरएसआई यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज 90s। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इसने कभी भी 90 का जोन छुआ नहीं था, एक यहाँ पे एक बार छुआ है, एक यहाँ पे इसने एक बार करा है राइट। आफ्टर इट वेंट इनटू एन अप ट्रेंड, यहाँ पे 90 का जोन नहीं टच हुआ है, 90 का जोन अब टच हुआ है यहाँ पे विद दिस ओके। दिस वाज द प्लेस जहां पे इसने 90 का जोन टच करा। I'll zoom in further. This was the place जहां पे 90 का जोन टच करा, उसके बाद you had definitely got certain price rally happening, but again what happened over here, RSI started falling down। तो RSI काम करता है इसके अंदर भी, and I'll tell you why. There is a logic behind it कि RSI is 14 what we have taken up over here, that is past 14 days of price up and down movement। If you see over here what is happening, number of your red and green candles, when you are comparing that thing, the number of red candles are more than the green candles। what does it show? that the price action definitely uptrend कर रहा है, but हर बार क्या कर रहा है, uptrend करके नीचे close कर रहा है, uptrend करके नीचे close कर रहा है। it's closing red, the open is the close, which we say कि close is the deciding price of the day, it is the most confirmed price of the day, that is closing negative। means what happens when you're talking about RSI also, price को ही decipher करा है। when we saw the formula, price को ही decipher करा है हमने यहाँ पे, and we can easily make out कि अगर price ही वहाँ पे काम नहीं कर रहा, RSI में आपको divergence दिखेगा ही कि भाई RSI will talk about if it is not giving that conviction। okay, now I'm glad Uday you made a good profit out of Fibonacci। Fibonacci definitely works। अब I will suggest आप Fibonacci और RSI divergence को combine करिए। I'm sure you will have many more profitable days going ahead। All right। कार्तिक इसमें sideways definitely possible है। as I said zone कि आपको रिवर्सल मिल गया है, नाउ यू हैव टू लुक डाउन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे हमने करा ना कि हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे गए, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें पता चला कि भाई यस नाउ दिस इज टेकिंग अप अ रिवर्स पोजीशन एंड वी कैन गो over on that side। इसके लिए I will suggest go back to the session of Fibonacci which will talk about reversals and retracements, and from that you'll be able to like connect both the concepts well, right? Now, I think we've answered most of the questions that about RSI and divergence. Thank you so much, guys, for joining in on today's session. Please leave your feedback. That helps me in coming back with more energy in the next session. And if there are any particular queries, you can always email that or you can message those, and I'll be happy to help in that case. Thank you so much for joining in today's session.